students, let's continue with complex numbers, exercise number 3.1, question number 3. Here, -1 plus root 3i, the whole cube is given. Before starting this question, once again, you have to remember the values of I square, I cube. बस ये तीन वैल्यूज याद रखो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे को सम आ जाएगा. चलो फटाफट याद करो. What is the value of I? What is the value of I? The value of I is minus root 1. The value of I is minus root 1. What is the value of I square? It is minus 1. What is the value of I cube? It is minus I. ये चीज याद रखो. कोई भी सम कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो हियर इट इज -1 प्लस रूट 3 है. पहला नंबर माइनस है ना, तो सॉल्व करने में तुमको डिफिकल्टी हो सकती है ना, तो एक काम करो ना, ऐसा कर दो ना, रूट 3 है -1 द होल क्यूब, a माइनस b द होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. दिस इज द फॉर्मूला. तो चलो a क्यूब दैट मीन्स रूट 3i क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b मतलब 1 प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब दैट इज 1 क्यूब. रूट 3 क्यूब विल बी 3 रूट 3. रूट 3 into root 3 is 3. 3 into root 3 is 3 root 3. I cube minus 3 into root 3 square is 3. I square is I square plus 3 root 3 I minus 1. I cube is nothing but minus I. So 3 root 3 into minus I is minus 3 root 3 I. Okay? Minus 3 3s are 9. I square का वैल्यू क्या है? -1. तो -9 into -1 is +9 plus root 3 I -1. I will write what formula I have used. I have used I square is equal to -1 and I cube is equal to -I. ये फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे. -3 root 3i plus 3 root 3i will get cancelled. 9 minus 1 is 8 and 8 is a रियल नंबर. हमें बोला है कि प्रूव करो कि ये एक रियल नंबर है. वो रियल नंबर प्रूव करने के लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मूला. फॉर्मूला यूज किया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यूज किया, आई क्यूब का वैल्यू -i यूज किया, यू विल गेट द आंसर. दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है. ओके, this is question number 4 and this is a very simple type of question. Actually there are I think 6 to 7 questions in this question, but I am solving these 4 questions because this is very simple. You all can solve it easily. I'll give you a trick. I raised to 35. This is the first one. I raised to 35. Now I raised to 35 can be written as I raised to 34 into I raised to 1 because 34 plus 1 is 35. I raised to 34 is I square raised to 17. Hope you understand. 34 I square लिखो. अब तुम लोग बोलेंगे सर I square क्यों लिखने का? Because you all know the value of I square is -1. The value of I square is -1. So I square raised to 17 क्योंकि 2 17s is 34. Now what is the meaning of I square? That is -1 raised to 17 I. Now -1 को 17 बार मल्टीप्लाई करेंगे. -1 एक माइनस नंबर है और उसके ऊपर 17 है. 17 इज एन ऑड नंबर. हमेशा याद रखना, ऑड नंबर रहेगा ना और नेगेटिव नंबर अंदर है ना, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा. लेकिन अगर एक इवन नंबर रहेगा ना ऊपर, उसके टकले पे इवन नंबर रहेगा ना, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. दिस इज अ ट्रिक. अगर -1 के ऊपर 17 है तो 17 बार मल्टीप्लाई करो, -1 ही आंसर आएगा. लेकिन अगर -1 के ऊपर 18 है, -1 के ऊपर 20 है, तो आंसर प्लस में आएगा. समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बिकॉज प्लस, तो 2 नंबर रहते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है. लॉजिक क्लियर होगा? शायद नहीं होगा तो ये देख लो. -1 के टकले पे ऑड नंबर, आंसर नेगेटिव.
-1 के टकले पे इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव. दिस इज द लॉजिक. बस खत्म. सो दिस विल बी -1. -1 into I, that is -I. This is the answer. Similarly here, sum number second. I raised to 888. So it is I square raised to 444. Hope you understand. 2 से डिवाइड किया इसको, तो 2 4 8, 2 4 8, 2 4 8. तो I square raised to 444. टकले पे कौन सा नंबर है? इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है? इवन नंबर. तो आंसर विल पॉजिटिव. आंसर विल 1. अरे बराबर. नेक्स्ट थर्ड इज I raised to -93. तो I raised to 92 into I. अरे बराबर. I raised to 92 मतलब I square raised to 2 4 8, 2 6 12 I. अरे बराबर. -1 46 I. टकले पे इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव. आंसर इज I. क्लियर. नेक्स्ट इज फोर्थ वन. I raised to 116 मतलब I square raised to 2 5 10, 2 8 16. -1 raised to 58. -1 raised to 58. टकले पे इवन नंबर, आंसर पॉजिटिव. आंसर इज 1. Hope you understand. Okay. This is question number 5. We have to show that this is also a real number. So let us start. So very easy question. 1 plus I raised to 10. अभी मैंने सिखाया था. 2 raised to 5 plus I raised to 20. 2 raised to 10. I raised to 30. 2 raised to 15. अरे समझा क्या? समझा ना? 2 5 10. 2 10 20. 2 15 30. 1 प्लस I स्क्वायर के ऊपर एक काम करो. -1 raised to 5, -1 raised to 10, -1 raised to 15. Okay, I square value is -1, right? I square value is -1. Okay, so 1 -5 ऊपर ऑड नंबर नेगेटिव, ऊपर इवन नंबर पॉजिटिव, ऊपर ऑड नंबर नेगेटिव. अरे बराबर ना. ऊपर ऑड नंबर नेगेटिव, इवन नंबर पॉजिटिव, ऑड नंबर नेगेटिव 1. आंसर इज 0. इज अ रियल नंबर. Question number 6 is a very simple question, so I'm not wasting my time. You all will be doing that as a homework. Then you all will be doing question number 7. Okay, chalo, let's start. Write the question फटाफट. Question is 1 plus I square, I4, I6, I8, I10, I12, I14, 16, 18, 20. बराबर ना? चलो. 1 plus I square will remain I square. 4 will be 2 2s are 4. Okay ना? Easy ना? I6 will be 2 3s are 6. I8 will be 2 4s are 8. I10 will be 2 5s are 10. I12 will be 2 6s are 12. I14 will be 2 7s are 14. I16 will be 2 8s are 16. I18 will be 2 9s are 18. I20 will be 2 10s are 20. Hope this is clear. Simple. 1 plus I square is nothing but -1. I square is nothing but -1. टकले पे एक काम करूं, -1 करके बताऊं. बराबर ना? एक स्टेप और कर देता हूं. चलो. -1 प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 क्यूब प्लस -1 4 प्लस -1 5 प्लस -1 6 प्लस -1 7 प्लस बाप रे -1 8 प्लस -1 रेज टू 9 प्लस -1 रेज टू 10. देखो ना उसके इंडेक्स पे, देखो ना कैसे नंबर्स है. अभी ऑड इवन चेक करते हैं. 1 -1 ऑड नंबर, ऑड है कि इवन है? इवन नंबर, तो आंसर +1. ऑड नंबर -1, इवन नंबर +1, ऑड नंबर -1, इवन नंबर +1, ऑड नंबर -1, इवन नंबर +1, ऑड नंबर -1, इवन नंबर +1. अरे क्लियर? तो 1 -1 कैंसल, 1 -1 कैंसल, 1 -1 कैंसल, 1 -1 कैंसल, 1 -1 कैंसल.
Answer is 1. Hope this is clear. This is question number 8, sub question 1. In this question, we are supposed to find the values of x and y. Now, all of you pay attention here. First thing is x plus 2y plus 2x minus 3y is equal to 5 minus 4i. Plus 4i को मैंने वहां पे ले लिया, it becomes minus 4i. Okay. Now see, when you look at this question, you will find that this is the real part. This is I, that is the imaginary part. Similarly, on the right hand side, this is the real part, and this is I, this is the imaginary part. That means your equation is divided into real imaginary, real imaginary, real imaginary, real imaginary, real imaginary, real imaginary. That means what I can do is I can equating the real and imaginary parts. What I will get? I will get x plus 2y is equal to real part is 5. And imaginary is equal to imaginary, that is 2x minus 3y is equal to imaginary part is minus 4. Don't write I, write the imaginary part only. 2x minus 3y, write the 4. Okay? Now, you have to solve these two equations simultaneously, but the numbers are not same. So, multiplying equation number 1 by 2. So, I will get 2 into x, 2x, 2 2s is 4y, 2 5s is 10. This is equation number 3. I will write this equation below this. Minus 3y is equal to minus 4. Equation number 2. I will write subtracting 2 from 3 minus plus minus ka plus. This will get cancelled. 4 plus 3 is 7y. This is 14. Therefore 7y is equal to 14. Therefore y is equal to 14 upon 7. Y is equal to 2. Putting y is equal to 2 in equation number 1, that is x plus 2y is equal to 5, x plus 4 is equal to 5, x is equal to 5 minus 4, x is equal to 1. So I have got the value of x as 1 and y as 2. Hope this is clear. This is the last question of today's video. Now, here also we are supposed to find the values of x and y, but here you have to do cross multiplication. So x plus 1 multiplied by 1 minus I plus y minus 1 multiplied by 1 plus I upon 1 plus I, 1 minus I is equal to I. Hope you understand. This is cross multiplication. चलो bracket multiply करते हैं. X 1 minus I plus 1 minus I plus y 1 plus I minus 1 plus I upon a square minus b square is equal to I. X into 1 is x minus x into I is xi. 1 into 1 is 1, 1 into I is minus I. Y into 1 is 1, y into I is yi. 1 into 1 is 1, 1 into I is minus I upon 1 minus I square का value minus 1 is equal to I. कुछ कैंसिल होएगा क्या? हाँ हो जाएगा, देखो ना. 1 gets cancelled and nothing is cancelled. Okay. Now take all the real terms together. X is real, y is real. बस x and y is real. So x plus y is real, and take the imaginary terms together. Plus imaginary terms are yi minus xi minus I minus I, that is minus 2i. Okay, upon 1 plus 1 is 2, 2 नीचू तो उधर ऊंचू, so it will become 2i. Okay, so here you will get x plus y plus y
माइनस एक्स माइनस 2i कॉमन, i सब में कॉमन निकाला, इज इक्वल टू 2i. दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज इमेजिनरी. इधर रियल पार्ट नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, इधर रियल पार्ट ये लगा देते हैं. x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2i इज इक्वल टू 0 प्लस 2i. अब देखो ना, रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी. चलो इक्वेटिंग लिखो, यहाँ पे लिखो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. x plus y is equal to 0 and minus x plus y minus 2 is equal to 2. That is minus x plus y is equal to 4. Equation number 2. 1 को नीचे लिखते हैं, 1 add x x cancelled, 2y is equal to 4, y is equal to 4 upon 2, y is 2. Putting y is equal to 2 in equation number 1, that is x plus y is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. So I got the values of x and y. Hope this is clear.